Hello aspirants and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 31st January 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about India's first solar mission. Now, this is a very highly anticipated mission of India, especially of ISRO, जिसे आदित्य L1 के नाम से जाना जाता है. Now, ये जो mission है, it has been in the news because country's first solar mission likely to be launched by June or July of the current year only. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके mission is going to work. So, the country's first solar mission is proposed to be launched by the mid of this year, which can be important for our prelims and also from GS paper 3 Science and Technology point of view. It has been taken from the Indian Express. So first we'll learn about the news and then we'll try to learn about this Aditya L1 mission के बारे में. So the news says that the VLEC, that is the visible line emission coronagraph. Now you should know that it is one of the payload. ठीक है, तो ये व्हाट इज द प्राइमरी पेलोड. सो देयर आर ये जो आदित्य मिशन है, आदित्य एल1 मिशन में आपको 7 पेलोड मिलेगा. तो ये जो VLEC है, इट इज वन ऑफ द पेलोड. एंड इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पेलोड, इट इज बेसिकली अ साइंटिफिक और इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज कैरिड ऑन बोर्ड अ सैटेलाइट फॉर दिस साइंटिफिक पर्पज. ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी पर्पज के लिए, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च के लिए हो या कुछ फोटोग्राफी के लिए हो, लाइक वट एवर पर्पज के लिए ये जो सैटेलाइट बनते हैं, तो उसमें जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेस्ड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, उसी को हम पेलोड कहते हैं. ठीक है, तो VLEC इज वन ऑफ द प्राइमरी पेलोड ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन आदित्य L1, एंड दिस पर्टिकुलर पेलोड दैट इज VLEC हैज बीन हैंडेड ओवर टू द ISRO हु विल बी कंडक्टिंग दिस मिशन, और इसे हैंड ओवर किया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ISRO इज प्लानिंग टू लॉन्च द आदित्य L1 मिशन, फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन बाय जून और जुलाई 2023, टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना. ऑलराइट, तो दिस यू कैन सी द कोरोना. ऑलराइट, दिस इज द कोरोना दैट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय दिस आदित्य L1. So this can be asked in the examination ki which part of the sun is going to be observed by the Aditya L1, and these are the other parts of the sun, that is the core, which is at the most interior part of the earth, and there you'll find the radioactive zone, then convective zone, and this is the corona which will be studied by the Aditya L1, and also some important parts are the chromosphere, photosphere. So here is a description and the names of the parts of the various parts of the sun, so you can go through this as well. Okay, and you should also know that sun में बहुत सारा आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी, जैसे कि कोरोना है, then the photosphere or the chromosphere, then solar emission. ठीक है, solar winds and flares, as you can see here, flares and winds are also important. ठीक है, तो ये सारा चीजों में आप देखोगे बहुत सारा मिशंस लाइक कंडक्ट किया जाता है टू स्टडी वेरियस पार्ट्स ऑफ द सन. So we'll try to learn about this Aditya L1 mission very simply. तो यहाँ पे जो launch vehicle use किया जाएगा, it is PSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle, which will be having 7 payloads. अब ये जो 7 payloads या instrument, as I told you, scientific or the technological instruments, तो यहाँ पे 7 payloads use किए जाएंगे, और इसमें से ये जो VELC, that is the Visible Line Emission Coronagraph, now this has already been delivered to the ISRO, and these are the names of the other payloads. So you can look at this particular payload, कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. And also about the objective के बारे में, as I told you, it is going to conduct a survey about the corona के बारे में, and also about the sun's photosphere, chromosphere, solar emission, solar winds and flares, and also about the coronal mass injections. Okay, so these are the parts which will be studied by the particular Aditya L1 mission, and will also carry the round the clock imaging of the sun. The mission will be launched by ISRO to the L1 orbit. तो यहाँ पे जो सन और अर्थ का जो ऑर्बिटल सिस्टम है, जिसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, ठीक है, L1 से लेके L5 तक, तो ये L1 ऑर्बिट में ये इसको आप कह सकते हो इसे लॉन्च किया जाएगा, which is about 1.5 million kilometer from the earth. The orbit allows Aditya L1 to look at the sun continuously. तो अगर मान लीजिए कि आप इस प्लेस में अगर आप इसे अगर इस ऑर्बिट में अगर आप इसे प्लेस कर दोगे, then it will be you can say it will be facilitating the particular Aditya L1 to look at the sun continuously. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया का पहला सोलर मिशन. तो वैसे अगर आप देखोगे न्यूज में द मिशन ऑफ चाइना, ठीक है, चाइना का भी एक मिशन, अ सोलर मिशन वाज इन द न्यूज. तो अ चाइनीज स्पेसक्राफ्ट हैज टेकन फ्लाइट टू स्टडी द सन एंड इंप्रूव स्पेस वेदर प्रेडिक्शन. ठीक है, तो इसका जो पर्पस है, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू एनहांस द स्पेस वेदर प्रेडिक्शन के बारे में. ठीक है, तो जो सैटेलाइट है बाय चाइना, इट इज नोन एज द एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, इट इज नोन एज द एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसे ASOS कहा जाता है, ASOS. ठीक है, द फुल फॉर्म इज एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका निकनेम जो है इट इज क्वाफू 1. ठीक है, तो चाइना का मिशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इंडिया का जो रिसेंट मिशन है, इट इज आदित्य L1, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट.
तो अगर आप देखोगे L1 के बारे में, एज आई टोल्ड यू किसे प्लेस किया जाएगा L1 में, सो इट रेफर्स टू लैग्रेंजियन और लैग्रांजियन पॉइंट वन ऑफ द 5 पॉइंट्स इन द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ सन सिस्टम। तो ये जो अर्थ सन सिस्टम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि L1, L2, L3, L4, L5 में यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। तो दिस यू कैन सी L1 जहाँ पे प्लेस किया जाएगा आदित्य L1 को, ठीक है, दिस यू कैन सी आदित्य L1। सो लैग्रांजियन पॉइंट्स आर पॉइंट्स इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टू बॉडी सिस्टम लाइक द सन एंड द अर्थ प्रोड्यूस इनहेंस रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ बैलेंस रहता है of the attraction and repulsion का, ठीक है। So this can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position। तो मान लीजिए कि इस तरीके का जब बैलेंस रहता है तो जितना फ्यूल कंजम्पशन होना चाहिए उतना नहीं रहता है, तो इसीलिए दिस प्लेसेस आर क्वाइट कन्वीनियंट। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस L1 इज दैट कि यू ऑल्सो गेट अ वेरी नाइस पोजिशन टू लुक टू टेक इमेजेस ऑफ द सन, ठीक है। द L1 पॉइंट इज होम टू दी, तो यहाँ पे आप देखोगे देयर इज ऑल्सो अनदर मिशन विच इज नोन एज सोहो मिशन, एंड द सोहो स्टैंड्स फॉर सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अब जो सोहो मिशन है, इट इज नॉट of India, but it belongs to it is a joint mission of NASA and the ESA. NASA, you know, that is the National Aeronautics and Space Administration, and ESA stands for the European Space Agency. So they have also jointly developed a mission called the SOHO mission, और SOHO में जो यहाँ पे point है, it also uses L1 point only, that is the Lagrange point 1, and the same point will be used by the Aditya L1 as well. इसी topic के basis पर there is a prelims practice question, please answer in the comment section. The next article is about the forest and the tree cover in India. Now, even though this terms forest and tree cover may sound as synonymous, but they are not, because forest cover जो होता है, अगर आप देखोगे ट्री कवर यहाँ पे जहाँ पे ट्री दिखाई देता है उसे हम ट्री कवर कहते हैं, बट फॉरेस्ट कवर यू शुड नो जहाँ पे डेंस ट्री रहता है, और द ट्रीज इफ इट ऑक्यूपाइज अ सर्टेन एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस, ओनली देन वी कॉल इट एज द फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का किस हालत में है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और इंडिया का एक टारगेट है, यू शुड ऑल्सो नो, ऑफ एफोरेस्टेशन बेसिकली, विच वी कॉल एज द नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, जिसे GIM भी कहा जाता है, ग्रीन इंडिया मिशन। तो इस मिशन में इट इज सेड दैट इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इट्स टारगेट, ठीक है। तो जितना यहाँ पे टारगेट लिया गया था, इंडिया उस टारगेट में काफी पीछे है। और यहाँ पे कुछ स्टेट्स विच आर मेजरली कंट्रीब्यूटिंग इन दिस नेगेटिव टारगेट, इन दिस नेगेटिव अचीवमेंट ऑफ द टारगेट आर आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड केरला, जहाँ पे एफोरेस्टेशन तो नहीं, जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई द टारगेट्स आर नॉट बीइंग मेट करेंटली। एंड इस आर्टिकल में हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे द स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया के बारे में। So this can be important for our prelims, and also from mains it can be asked in our GS paper consumption point of view, from the environment point of view it is quite important, so it has been taken from the Hindu। तो हम पहले बात करेंगे अबाउट द GIM के बारे में, दैट इज द ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ इंडिया। सो ये एक मिशन है जो 2014 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2014 में। सो GIM इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द NAPCC। तो NAPCC इट स्टैंड्स फॉर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे 8 मिशंस है, सो वन ऑफ देम इज GIM। So it was launched in February 2014, as I was saying. It aims at protecting, restoring and enhancing India's forest cover. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, प्लस रिस्टोर एंड ऑल्सो इनहेंस द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इन रेस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। द टारगेट अंडर द मिशन इज 10 मिलियन हेक्टेयर। ये जो टारगेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया बेसिकली एम्स टू हैव अ फॉरेस्ट कवर ऑफ 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑन फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड फॉर इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट और ट्री कवर एंड टू improve the quality of existing forest. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, that is इसे MOEFCC भी कहा जाता है, in short, supports the state and the union territories for carrying out afforestation activities. तो you should know कि बहुत सारा ऐसा activities है, बहुत सारा programs है, schemes है गवर्नमेंट में। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम NAP कहा जाता है, जिसे द सेम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था इन 2000 में। तो ये जो मिशन है इन सबको कैरी आउट करने में हेल्प करता है दिस मिनिस्ट्री, एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग द ट्री कवर like is critical to sequester. So sequester is basically storing carbon and bolstering India's carbon stocks as part of its international commitments to mitigate greenhouse gas emissions. All right. So as I was saying that there's a difference between this forest cover and tree cover. तो ये जो tree cover है, the tree cover refers to the total area of land that is covered by trees. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यहाँ पे फॉरेस्ट में हो या फॉरेस्ट में नहीं हो। सो लाइक रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस इट इज, अगर ट्री से कवर किया गया रीजन है तो इट कम्स इन द ट्री कवर ओनली, ठीक है। बट इफ यू लुक एट द फॉरेस्ट कवर ऑन द अदर हैंड, इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू द एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाय अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, व्हिच इज डिफाइंड। तो अगर आप देखोगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज एन एरिया विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी। तो जो डेंसिटी है इट शुड बी एटलीस्ट 10%, एंड ऑल्सो जो एरिया है कवरेज का इट शुड बी 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर लैंड में अगर 10% डेंसिटी अगर यहाँ पे ट्रीज का है, अगर ट्री कैनोपी का है, देन इट इज टर्म्ड एज अ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। सो यू शुड नो दैट ऑल फॉरेस्ट कवर इज अ ट्री कवर, बट ऑल ट्री कवर इज नॉट फॉरेस्ट कवर, ठीक है। सो दिस आर बेसिकली द पार्ट्स, दिस इज अबाउट द नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में, जिसे GIM कहा जाता है, राइट।
And finally, if we look at the status of forest in India में, तो as per the Indian State of the Forest Report of 2021, तो इसे लॉन्च किया गया था prior 2 years. So इसे कहा जाता है India State of Forest Report. Now this report is quite positive because यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माना जाता है कि इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इंडिया में वो काफी इंक्रीज हुआ है, ठीक है. सो इंक्रीज बेसिकली हुआ है बाई 2261 स्क्वायर किलोमीटर्स सिंस द लास्ट असेसमेंट. तो ये जो असेसमेंट था, तो लास्ट असेसमेंट 2 साल पहले हुआ था, तो यू विल सी दैट 2 साल में यहाँ पे 2261 स्क्वायर किलोमीटर जो कवर है वो इंक्रीज हुआ है. एंड ऑल्सो इंडियाज टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर वाज 80.9 मिलियन हेक्टेयर व्हिच अकाउंटेड फॉर. तो ये जो 21 जो डेटा है, जो अकॉर्डिंग टू द 21 डेटा, सो वी डोंट हैव लाइक करंट डेटा अबाउट दिस, बट अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेटा, तो यू शुड नो दैट इंडिया में 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है इट इज द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ओनली. और ये अगर आप देखोगे 80.9 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ फॉरेस्ट कवर एंड द ट्री कवर. तो दिस बेसिकली आप देखोगे इट अकाउंट्स फॉर 24.62% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है. तो इंडिया का जो भी जियोग्राफिकल एरिया है, तो इसमें अगर आप देखोगे इट इज 24.62% जो है इट इज ओनली फॉर like it is the forest cover or the tree cover, ठीक है. So 24.62% is a very important number. तो the report said the 17 states and UTs जो है इंडिया की केस में, it has also reported that the forest cover is more than 33%, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जो एवरेज है इंडिया का it is 24.62%, और 17 states and UTs में अगर आप बात करोगे इंडिविजुअली they have had more than 33% of their area, ठीक है. तो सबसे अगर हम ज्यादा बात करेंगे about the forest cover इंडिया के केस में, तो मध्य प्रदेश has got the largest forest cover in India, followed by Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Maharashtra. So this is a very important fact that I am sharing with you. Arunachal के आगे you will find मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कवर है. लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, अगर हम देखेंगे ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, तो स्टेट में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो इसमें आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, द फॉरेस्ट कवर का जो परसेंटेज है ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया, तो सबसे पहले ऊपर आता है मिजोरम. तो मिजोरम के केस में 84.53% जो है ना इट इज ओनली फॉरेस्ट ओनली. एंड उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जहां पे 79.3% है. So these are certain important facts and figures जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. If you observe all these states which are having the maximum forest covers, maximum percentage of forest cover, it is in the northeast region only. There is Mizoram, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, then Nagaland. And also, if we look at the issues which are being faced by the forest in India, तो पहला हम बात कर सकते हैं about the shrinking forest cover. तो obvious सा बात है that the population of India is growing. ठीक है, India is about to be the most populated country of the world by surpassing China. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा होता है फॉर दी सेटलमेंट्स हो गया, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर लाइवलीहुड. तो इसीलिए जो फॉरेस्ट कवर है इट इज श्रिंकिंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया. द आइडियल परसेंटेज, अब आई टोल्ड यू कि इंडिया का परसेंटेज कितना है 24.62%, बट आइडियल जो परसेंटेज है इट शुड बी 33%. और अगर मान लीजिए 33% है देन इट विल बी सफिशिएंट टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. लेकिन इंडिया के केस में आपको मैंने बताया कि इट इज 24.62. तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकिंग सर्टेन इनिशिएटिव like the National Afforestation Program to increase the forest cover of India. And also about the resource access conflict. So there is often a conflict between the interest of the local communities and those of the commercial interest, ठीक है, such as the pharmaceutical interest. अब देखोगे यहाँ पे जो भी like people who resides in India, तो if they are the local communities who belongs to the regions of the forest, so they would be having their own share of interest जहाँ पे वो depend करेंगे on the forest basically for their shelter या मान लीजिए for the livelihood. But if you look at the commercial interest, now they basically look towards exploiting the forest cover in order to meet their requirement. For example, the pharmaceutical industry or timber industries. Okay. Now this has led to the social tension and even violence as different groups struggle to access and use the resources of the forest. Okay. तो कोई यहाँ पे like someone would be like you'll find some community, some class would be like interested in developing their shelters, and some would be like interested in extracting resources from the forest. Okay. So there are quite a conflict of interest among the people, and also about the climate change, because forest disturbances caused by climate change include the insect outbreak, ठीक है, insect outbreak and also invasive species during climate change migration. तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे ऐसे species आ जाता है कभी climate change के कारण which are not beneficial for the forest cover. ठीक है, then wildfire, you must have heard about the Amazon wildfire के बारे में. Then storms, and also about the reduced what they do is that they basically reduce the forest productivity and change the species distribution. So by 2030, if you see, so it has been predicted that 45 to 64% of forests in India will experience the effects of climate change and also rising temperature, that is the global warming.
Now, if we finally talk about the conclusion, then we can just end this topic by learning some of the points that we can write in order to enhance the forest cover of India. तो पहले बताया गया है about the utilizing of the technology of conservation. Now, in today's time, we know about artificial intelligence. हम बात करते हैं about the various technological advancement. तो ये सारा जो technologies अगर हम इसे use करते हैं, if we implement them like in the proper manner of forest, then also we can be able to conserve the forest as well. जैसे कि हम use कर सकते हैं remote sensing in order to learn about the forest, about the species के बारे में कि कहाँ पे ज़्यादा ट्रीज लॉस हो रहा है, कहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रहा है, इन ऑर्डर टू मिटिगेट देम, तो इन ऑर्डर टू मिटिगेट द लॉसेस. ठीक है, तो हम यहाँ पे रिमोट सेंसिंग जैसे टेक्नोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं फॉर विच कैन बी नीडेड इन द नीड प्रोटेक्शन. एंड ऑल्सो अबाउट द वी कैन ऑल्सो यूज द डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर्स फॉर सेफ इंट्रास्टेट एंड द इंटरस्टेट पैसेज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तो द फॉरेस्ट आप देखोगे जो भी एनिमल्स है, तो एनिमल्स लाइक ह्यूमन दे ऑल्सो मूव. ठीक है, कभी वो इंटरेस्टेड मूवमेंट करते हैं, तो उनका जो ये मूवमेंट है इसको फैसिलिटेट करने के लिए नाउ दे शुड बी गिवन सर्टेन फॉरेस्ट कॉरिडोर. बिकॉज मान लीजिए कि इफ दे आर नॉट गिवन दिस कॉरिडोर्स एंड इफ दे कम टुवर्ड्स द हाईवेज एटसेट्रा, तो इट कॉजेज द डेथ. ठीक है, आपने बहुत बार मैंने यहाँ पे कवर भी किया है अबाउट मैन एलिफेंट, अबाउट ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट के बारे में. ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे होना चाहिए डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर्स कैन बी मेंटेन गिविंग अ मैसेज ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस. ठीक है, ताकि ऐसा कंफ्लिक्ट ना हो बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल. एंड ऑल्सो प्रोमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री. सो दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स integrating the trees and forest-based products into the farming system. So this can help increase the forest cover and also provide farmers with additional incomes and resources. This is a topic basis पर प्लीज practice question है. Please answer in the comment section. There's another question from the same topic. Again, please answer in the comment section. The next article is a sad one because an eminent litterateur, Tagang Taki, is no more. So this particular article belongs to the state of Arunachal Pradesh, where Tagang Taki ji has passed away aged 83 years on 29th of January at his residence in Panging due to old age related problems. So इस article में हम यही बात करेंगे इनके works के बारे में. We'll try to learn about his work, which can be important from an exam perspective, which can be asked in our prelims and also mains. We can write about him in relevant questions, in relevant answers. It's been taken from the Arunachal Times. So Tagang Taki ji, who is stated to be the first, you should know that he has often been mentioned as the first writer from the state of Arunachal Pradesh. Now he has written and published the book that is Adi Ahomiya Ingraji Hombadma in 1959 at the age of just 19 years, okay, which is a very important achievement. A person with multiple talents, Taki was also the first linguist, lyricist and also dramatist of the state. He also became the first editor of a handwritten school magazine. Now it is important, Girbani. Okay? So Girbani के जो पहले editor थे, it was Tagang Taki ji. It was published by the government high school in Pasighar. Okay? So its other books are Himantar Jui, then Ahban, then Nefa Adi Mishing Chatra Hamajaloy, then Adi Sadhu Prashant Opsaran, Adi English Word Book, and then the Adi Dulong Kidi Log Diri Gumin Soin, and the Angong Yoting, an anthology of poems in Adi language, and the Solung Festival. Now these are the most remarkable works of Tagang Taki ji which can be asked in the examination. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. These were a question that are asked in the previous video. Let's look at the answer. So the reservation of seats for the SCs is not applicable to Arunachal Pradesh because of the negligible population of SC in the state. And also about rubella, it is a contagious, generally mild viral infection. Yes, it occurs mostly in the case of children and the young adult, especially the pregnant woman के case में. And also you will find a measles जो है, it is highly contagious viral disease and it is a cause of death among the young children globally. And if we talk about the SUFFER system, that is the system of air quality forecasting and research. It has been developed by IITM Pune, that is the Indian Institute of Tropical Meteorology Pune. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining and we'll meet the next one. Bye bye and take care.